Hi and welcome back to my channel Grow with Dilip. Interesting day in the markets today. आज काफ़ी सेलिंग आई. Indices 1% डाउन थे और IT इंडेक्स 3% डाउन था. तो कल एक यहाँ ओवर द वीकेंड डीप सीक करके चाइना का न्यू AI आया है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग आई है, स्पेशली AI रिलेटेड एनवीडिया और अदर्स. और इंडिया में भी सेम हुआ. So anyways, that helped to get the markets down, including the IT sector. In fact, Nifty Bank is the one that held up well today. So we'll see. So मेरे shorts जो last week open थे, they made some money. So I got more than 10K today. So nice day for me. So this is the only thing that seems to be working. Puts Axis Bank और निफ्टी के पुट्स थे मेरे पास, जो मैंने दोनों में प्रॉफिट बुक कर लिया सुबह जैसे ही मार्केट खुला. सो उसके बाद निफ्टी और बहुत गिरा तो आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट आई वुड हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन एक्सिस बैंक. सो नेट ओके 10K इन अ डे, नॉट बैड. So that is what I made today, and market still looking bad. So जैसे निफ्टी का चार्ट मैं दिखा रहा था प्रीवियस वीडियोज़ में भी, 23,000 was the level that I took a punt on last week. Then I took it on 23rd जब ये सेकेंड डे अप गया था, but it was not breaking this big candle. तो फ्राइडे तो कुछ हुआ नहीं, but over the weekend after the news, selling below this level, which I think is a crucial level. So I think now if past history is to be believed, then we could see levels of around 21,000. Panic setting in now, because IT था जो होल्ड अप कर रहा था, बट अभी वो भी उसमें भी सेलिंग आ रही है. तो आई डोंट नो व्हाट विल होल्ड. सो लेट्स सी इफ दैट पैन्स आउट और थोड़ा कल रिस्पाइट मिलता है या पुल बैक आता है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि आज 1% गिर गया है और 0.5% फ्राइडे को भी गिरा था, तो अराउंड 1.5% गिर चुका है ऑलरेडी मार्केट. सो एक्सपेक्टेड कि थोड़ा हो सकता है कि पुल बैक आए around 23,000 levels तक, but I would look to short there again if I get the time. Otherwise I'll try and buy some stuff like liquid bees or something else, just to keep accumulating some cash in a market like this. Yeah, so आज के लिए इतना ही. Nothing specific. There were two stocks which did well today, JK Cement and Mahindra and Mahindra. तो JK Cement, I don't know what if something's happening over there. I'm not following the news. Fundamentals के हिसाब से तो कुछ नहीं लग रहा है. And Mahindra, the only possible reason that I think is उनके शायद जैन में सेल्स अच्छे हुए होंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है. But we'll come to know on Feb 1st जब ऑटो के नंबर्स आएंगे. So we'll see. These two look okay, but overall market negative. So better to be on the short side rather than buying anything, because I don't think things will go up in a hurry now. So if you're looking to buy, I think you would be better off waiting. But that's my opinion. You can consult your financial advisor and act accordingly. Okay, so आज के वीडियो में इतना ही. If you like the video, please forward it to your network, and if you're new to the channel, do consider subscribing. I share what I do in the market and my experiences. And if you have any queries or would like me to elaborate on something, do let me know, and I'll try to incorporate them in future videos. So I'll see you guys probably in the next one. Thank you. Bye bye.